So welcome to the first ever episode of Reverse Swing. Reverse Swing is a cricket show. मैं आपका host Ahmed और मेरे साथ मेरे दो दोस्त JD और Amar. But we wanted to give you, a true fan's perspective. We are not any experts in the field of cricket, but between the three of us and all of our friends as well who are here in the production team, our goal is to kind of give you what we think, what's happening in the world of cricket, how are things going with the Pakistan cricket team, and so on and so forth. So let's talk about, I know there's a big matchup coming for Team Pakistan, Gangrene, as I like to call them. They're playing Australia. So हमारा format कुछ इस तरह का होगा कि when we talk about key matchups, we're going to talk about firstly the ground, the pitch and the conditions, weather की क्या सूरत हाल है. पाकिस्तान के एक मैच जैसा आप लोग जानते हैं श्रीलंका वाला वॉश आउट हो चुका है. Hopefully और मैच वॉश आउट नहीं हो ताकि बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए. ये बहुत मसला हो जाएगा. Actually हमारे दो गेम we supposed to win against West Indies. It's England, right? So you cannot predict the weather over there. ये मैच खेला जा रहा है जहाँ तक हमने देखा है Taunton County Cricket Ground में. Somerset में है. तो टॉन्टन क्रिकेट ग्राउंड की जो मिस्ट्री पता चली है मैं पता चलेगा यहाँ से 5 ओडीआई हुए हैं. 5 ओडीआई हुए हैं, लेकिन here's the fun fact about that कि उधर एक तो अभी जो recently अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच वर्ल्ड कप का हुआ, but ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक अर्ली 80s या 79 में शायद उधर एक 83 में उधर लाइक फर्स्ट ओडीआई हुआ था. So really there is not a lot of ODI history for the ground, but the Royal London Cup that just finished back in mid-May, they had about 8 games over there. And the interesting part about that is basically there have been about 330 plus games. Okay. And the results are very even. Out of those 8 games, 4 have been won by teams batting first, 4 by teams batting second, so it's 50-50. But the most interesting fact about this ground is in the last 8 games, the teams that have won the toss have only won the game once. So that can kind of put a little tricky situation for, you don't want to be in like Sarfraz's or Aaron Finch's shoes on the 12th because it could very well turn out to be a good toss to lose. तो ये interesting रहेगा match अब देखते हैं. तो let's talk about playing 11. Team composition will be another segment that we will focus on. Right. तो पहले आते हैं पाकिस्तान के ऊपर. ठीक है जी. तो पाकिस्तान के obviously जैसा आपको पता है team composition is always a little tricky. ठीक है. और Australia obviously is scoring very aggressively, right? I mean they're taking a very cautious approach as well. Yes. तो क्या ख्याल है, पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव लेता हूँ. बिल्कुल. ठीक है. तो हम जैसे अपना लाइनअप अभी देख रहे हैं तो certain players हैं हमारी टीम में जो, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा कि हमारे जेडी भाई के बड़े चहीते हैं. बिल्कुल. इनका नाम है हसन अली. हाँ. तो 2 साल से अभी बहुत तो भाई जो है वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के परफॉर्मेंस में खेल रहे हैं. 2 साल से परफॉर्मेंस कैरी की भी आपकी टीम पर. तो भाई जो है पीएसएल में एक बोल रहा था हसन अली, उसके बाद काफ़ी अच्छी उनको सक्सेस मिली और उनको और मिलती है सक्सेस. बट जेडी इज अ बिग फैन ऑफ हसन अली. फुल डिस्क्लोजर, आई एम big fan of certain cricketers as well. You will learn more about us as we do other shows. But जेडी हसन अली की जो है ना बिल्कुल कैंडिड बात करते हैं. ठीक है. आई नो आप बहुत बड़े फैन हैं हसन अली के, बट अमर आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हसन अली की जो है कोई इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आई है. आप पीएसएल के सीजन साइड पर रख दें. ठीक है. मगर अगर आप देखें तो हसन अली की इस तरह की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं हुआ है. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि maybe I know it's a big game against Australia, but we should probably try considering benching Hassan Ali and bring a surprise package in the form of Hasnan. Well, I agree with you on a point कि Hassan Ali performance नहीं दे रहा है, but still Hasnan, like if you add Hasnan, you're gonna add another wicket-taking option. I agree with you, but I think you already have wicket-taking options in your team. Wahab Riaz is here. Wahab Riaz is a wicket-taking option, I would say. So he's playing. He's a wicket-taking option, and Shadab is your wicket-taking option. I don't think so. You need someone with little bit experience, I would say, with comparing our अभी जो हमारी 15 की lineup है उसमें Hassan Ali does make more sense.
I don't think so. It's too early to, I would say, just drop Hassan Ali as if right now. Maybe in future games, it depends on his performance. But जहाँ तक हसनैन की बात है, I think वो इंग्लैंड घूमने गया है. देखिए जी, मैं जो है इस पॉइंट को थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा क्योंकि in the last 2 years he has been really leading the pack for Pakistan team. Or yes, in the last few months his performances have been not what have been expected of him. It's not definitely up to the mark, but if you still pick up the stats, he is second on the list for the highest wicket-taking bowlers in the middle overs with 45 wickets since Champions Trophy. It is it's going to be too early to plug in someone as inexperienced as Hasnan against a team like Australia. Who are historically very good batters of pace. But again, I would say कि हसन अली के performances अगर आप देखें पिछले जो performance रही है उनकी, उसमें उनको upfront जो strike bowlers थे, they gave them a wicket, early wicket. Recently, last year or two, we are not getting early wickets. That is the biggest thing. And when Hassan Ali comes in, he tried to, instead of trying to get to the wickets, he has to go defensive lines. He has to go defensive lines. So it's a whole team effort. Yeah, I would say. It's a whole team effort. Absolutely. So I would not completely blame Hassan Ali. Yes. There are some loopholes in our bowling in the last 2 series. We just I don't understand our selection criteria in last 2 series against Australia and England. And it's just, we were on a very good path, and last 2 series we just destroyed our जो भी हमारा combination और at beginning of the Wahab Riaz was not on the list to go to a World Cup. All of a sudden, because someone was not performing, he has to stop him and goes for a World Cup. मगर वो Watson वाला spell. Okay, यार वो तो Watson वाला spell. यार actually पता है क्या? I hope वो Watson वाला spell वापस repeat ना. I just hope. अच्छा तो ये in a winning cause हो जाए. In a winning cause हो तो अच्छी बात है. टॉपिक खत्म करके और रोस्टर स्पॉट के बारे में डिस्कस करना है. काफी लोग जो हैं थोड़े कंसर्न्ड हैं नंबर 6 और नंबर 7 स्पॉट पे जो आ रहे हैं आपके बिग हिटर 6 हिटर एक आसिफ अली के नाम से. ठीक है, तो काफी लोग हैं वो थोड़े विंग्स में बैठे हुए हैं. कुछ लोग कहते हैं कि भाई इमाद वसीम को खिलाना चाहिए. कहते हैं कि आसिफ अली 50 ओवर फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, T20 में खिला दें. मैं थोड़ा चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ. आई नो थोड़ा टफ टाइम है उनके लिए आजकल, बट व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? आई मीन इज आसिफ अली शुड बी इन द मिक्स? I believe he should. Asif Ali, yes, I mean he has some ability, but that's just my personal opinion. In a 50-over game, you don't play batsmen who can only bat 10 overs or. अगर बंदा 7वें नंबर पे आ रहा है तो अगर आप उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो okay, you need to set an expectation for the person. He is coming on a number 7 position. So I think जो JD जो बात करना चाह रहे हैं कि I think हर टीम में अगर आप देखें इस टाइप के एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जिसका एक रोल डिफाइंड है, मगर आप देखें they also carry a secondary role on the team, right? अब इंग्लैंड में आप देख लें जॉस बटलर है, but he also keeps wickets. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देख लें मैक्सवेल है, but Maxwell also bowls 3 or 4 overs. आपने एंड्रेस रसल का नाम लिया, वो छक्के मारते हैं बड़े-बड़े. आप पांड्या को देख लें, he takes wickets as well. पांड्या को देख, राइट, परेरा को देख लें, राइट. तो उस टाइप के बैट्समैन हर टीम में, but I think हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है. one dimensional player. I agree, but आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? इमाद वसीम. So I would rather have somebody like Haris Sohail and Babar Azam coming and batting together and taking the innings deep. Yes, what in this particular game I would say, or in this World Cup, we should take a horses for courses approach. Right? Haris Sohail, if you want to leave Asif Ali in there, Haris Sohail actually can fill in what Shoaib Akhtar is doing. Fact of the matter is, अगर आप उसका record भी उठा लें तो in the last few innings, whatever he has performed, he has always performed well for Pakistan. And Haris and Babar generally tend to seem to play together well also. So if you he can blow left and if you take the game deep, then you can have the likes of Asif Ali, then you can have the likes of Shadab Khan, then you can have the likes of Mohammad Hafiz to come and get you that 8, 9, 10 runs and over to put that 300, 310 score on the board and be competitive. Same thing, if you are chasing, you can take that game deep to the innings, because the more deeper you take the innings, the more chance you have. How do you do that? By playing dependable batsmen. अच्छा, ये तो ये पाकिस्तान स्क्वाड की बात, थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया. अभी हमें पता है, डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल. अगर आपने पाकिस्तान का पहला मैच देखा तो आपको
किसी को भी इस बात का जो है आइडिया हो जाएगा, सारी टीम्स ने आई एम श्योर वॉच की होंगी, टेप्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी होंगी, एंड दे हैव अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्लान ऑन हाउ टू कम अगेंस्ट द पाकिस्तानी बैट्समैन. तो कंसीडरिंग दैट, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को देखते हैं, टिपिकली दे प्ले 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स एंड और 2 कपल ऑलराउंडर्स, नेथन कुल्टर-नाइल और स्टोइनिस, और 5वां का ऑप्शन होता है ज़ैम्पा, और फिर मैक्सवेल से वो कुछ ओवर्स कराते हैं. तो डज इट मेक सेंस ऑस्ट्रेलिया को ज़ैम्पा को ये गेम बिठा के, शुड दे ब्रिंग इन अनदर फास्ट बॉलर, मे बी लाइक समबडी लाइक केन रिचर्डसन? I don't think so. I think it's better if I think they have another option for off spinner line, right? Yeah, I think if you want to add, I don't think so. You need another fast bowler here, and because even though Zampa struggle against in India big time, against Pakistan, I would say. पाकिस्तान को अच्छा खेलता है, पाकिस्तान स्पिन को अच्छा जरूर खेलता है, लेकिन पाकिस्तान आई वुड से लेग स्पिन को शायद फिर भी बेहतर खेलता है, मेरा माय ओपिनियन, कंपेयर टू लाइन हैज एक्सपीरियंस. इफ ही मिडिल ओवर में यू नीड समवन टू कंटेन राइट नाउ. अगर आपने उसका गेम देखा हो रिसेंटली जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, मिडिल ओवर में दे वर जस्ट एक्सपोज्ड. उनके जो मिडिल जो मीडियम पेसर भी थे, देयर वर नो बॉलर जो रन कंटेन कर सके उधर. जहाँ वो देवर धवन की जहाँ मर्जी आ रही थी. विराट played some exceptional shots. Virat is Virat. Okay, no comparison. But still, you need someone to actually contain something on the middle as well. You not completely go with all on like wicket taking option. I understand. They already have wicket taking options. I would rather prefer line two, and it comes with experience as well in a spin department. Right. ये बात इसकी ठीक है. I think ऑस्ट्रेलिया चाहे तो कर भी सकता है, उनके पास ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो बहुत वन डायमेंशनल हो जाएंगे. अगर वो स्पिनर को बिठा के ऑल आउट पेसर पे जाते हैं ना, तो बहुत वन डायमेंशनल हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली पिचेस में थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए है जो हम लोग देख रहे हैं. स्पेशली जो अभी इनकी आज की गेम भी जो हम लोग पिछली गेमें देखी हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो गेम हुई है रिसेंटली. आज की गेम की बात करते हैं. वैसे सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, बट आई थिंक उस्मान ख्वाजा जो है, उन पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था. फर्स्ट 2 गेम में उन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया. आई थिंक स्कोर्ड अबाउट 13 इन द फर्स्ट वन, 15 और 17 इन द सेकंड वन. आज भी उन्होंने खेला है, बट थोड़ा टाइम लगा. उसकी इनिंग मैंने देखी है, ज़रा फॉर्म में आते हुए फिर आके इसने 3-4 चौके तो मारे हैं. तो डू यू थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम ख्वाजा एंड ब्रिंग इन मार्श? नो, इट्स टू अर्ली. No. I think it's too early. ख्वाजा brings a lot more to this Australian. क्योंकि लग रहा है उसका स्पॉट लग रहा है कि काफी सिचुएशनल बेस्ड है, राइट? टिपिकली आई थिंक ही सपोज्ड टू कम एज वन डाउन, बट आज सी स्मिथ आ गया, राइट? और कमेंटेटर्स अगर आपने कमेंट्री सुनी भी होगी तो कमेंटेटर्स आई थिंक वो बोल रहे थे कि मैक्सवेल को तो वन डाउन आना चाहिए लेकिन कुल्टर-नाइल. हां, वो उसने आई थिंक क्लार्क ने हंसी मजाक में बोली थी वो बात, लेकिन they were actually talking about bringing Maxwell at number 3, which I think they should have. Yeah, the requirement थी आज की, but I think ख्वाजा अभी he's a top quality player. Dropping him at this point of time will not be justice to him. I think पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है अभी. बिल्कुल. और आज जो थोड़ा टाइम लगाने के बाद उसने खेला है, वो खेल अच्छा रहा था आज. उसने वो जिस शॉट पे आउट हुआ है, वो एक्चुअली मैंने कभी ख्वाजा को शॉट खेलते हुए देखा नहीं है. बिल्कुल. नहीं, उस्मान ख्वाजा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. तो उस्मान भाई को हमारी तरफ से ईद मुबारक भी. आई नो ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंग्लैंड में हैं आजकल, तो दैट्स गुड. तो क्या ख्याल है, क्या लग रहा है गाइस के व्हाट इज गोइंग टू ट्रबल आवर टीम, पाकिस्तान टीम द मोस्ट, राइट? विल इट बी पैट कमिंस की बाउंसरें या विजय स्टार्क की यॉर्करें? यार मेरा बात सुनेंगे तो पैट कमिंस की बाउंसर एनी टाइम, क्योंकि हम लोग यॉर्कर खेलने वाली कौम है. हम लोग यॉर्कर खेलते बड़े हुए हैं. हमारे यहाँ जो पिचेस आती हैं वो भी जिसमें पिच का काम नहीं होता, तो सारे एयर में आउट करने वाले बॉलर हैं. तो यॉर्कर हम लोग खेल सकते हैं. जहाँ तक बाउंसर की बात है, वो वेस्ट इंडीज के ऊपर वाज काइंड ऑफ वेक अप कॉल फॉर बैट्समैन. लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया था. दे ट्राइड द सेम थिंग. दे ट्राइड द सेम थिंग, और दे हैव अ पेस. और मजे की बात ये है कि people were talking about us struggling against West Indies, but nobody talked about Australia struggling against the same attack. Because top order तो वो भी खा गए थे उनका. तो लेकिन I would think Pat Cummins definitely is going to be a bigger threat than Stark, and obviously batting ही जहाँ तक बात आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो एक ही नाम आता है जी, SS Steve Smith. I think one of my players to watch for in this match would be, actually if I could pick a couple, would be Steve Smith. and अगर पाकिस्तान की टीम से मैं सेलेक्ट करूँगा, I think it's time for Hassan Ali to step up. I think काफी टाइम से जो है ये जनरेटर बंद है. Yes. इसमें गैस डालें, इसमें तेल डालें, बट ये जनरेटर चलाएं. कुछ भी करें. If Pakistan takes early wickets,
then you can see the performance from Hassan Ali. Yeah, I think ये वो ओपन कौन करेगा बोले चलो इस टॉपिक पे हमारे ये तो मैं पता है कि आमिर की स्विंग हो जाए तो आज ही Open- लगता है सर इसमें नो ब्रेनर है ये तो ओपन आप आमिर हाफिज से करेंगे Exactly, आमिर हाफिज। टॉप 4 में से उनके 2 तो जी खबे हैं हाँ तो खबों को हमारे जो ये तो आप कह रहे हैं मैं मुझे बताओ लगा दूं आप लगाएं क्योंकि सेलिब्रेशन आने वाली है क्योंकि मेरा अगर स्टैंड आउट प्लेयर इस गेम में हो सकते हैं तो एज अ यूटिलिटी प्लेयर वो मैं मोहम्मद हफीज को बोलूंगा अमर आपकी क्या पिक है क्यों who is the player to watch out for in this matchup? Well, if you talk about Australia, I would say we should Maxwell because he can change game within 5 overs. यानी कि आज का जो मैच था यार लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का आज से निकल जाएगा बट उसने Exactly. 9 बॉलों में कुछ 28 रन मारे। धनाधन शुरू हो गया Exactly. So, and specifically your spinners in the middle, and if you are expecting up Shoaib to bowl against Maxwell, शोएब अख्तर की बात कर रहा हूं Shoaib अपना Shoaib अच्छा मलिक साहब मलिक साहब को अब अगर if he is playing तो फेंटा लग रहा है नहीं लग रहा है लग रहा है उनका फेंटा लगेगा उनका फेंटा मैक्सवेल तो नहीं छोड़ेगा #फेंटा अच्छा तो रियल क्विक आई थिंक हमने स्पॉट तो कवर कर लिया है लेट्स डू सम गेम प्रेडिक्शंस मेरी भी प्रेडिक्शन जो है वो है तो ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस मैच बट अगेन वी वुड लव टू हैव आवरसेल्व्स प्रूव्ड रॉन्ग भाई दिल तो पाकिस्तानी और दिल रहेगा भी पाकिस्तानी तो दे दे पाकिस्तान हम तो पाकिस्तानी को दे दे तो बस इधर ही खत्म करते हैं शो ये मेरा वोट तो पाकिस्तान को ही है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान फिर हमारी टीम जल्दी से अपने वोट बता दें ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया एंड ये है हमारे प्रिटी बॉय अली भाई क्या कहते हैं आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान पाकिस्तान। उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस जैसी रही है और जिस तरह वो कमबैक किया उन्होंने आई थिंक पाकिस्तान इज फेवरेट फॉर द गेम आई गेस कि पाकिस्तान हैज अ चांस पाकिस्तान कैन विन दिस गेम तो क्या कहते हैं क्या होने वाला है मैच में फेंटा लग रहा है नहीं लग रहा नहीं मैं पूछने वाला था 92 में क्या हुआ था यार देखो एक तो भाई आप लोग जो हो ना ये जो भी ये है मील शॉप्स वगैरह जो होती है ना बैठ के जिनके पास कोई टाइम नहीं है फारिग टाइम तो खैर हमारे पास भी है बट इट्स ओके हम टाइम निकालते हैं आई मीन आई रियली वांट पाकिस्तान टू विन बट द थिंग इज ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक 2 गेम हारना आई डोंट सी दैट हैपनिंग तो डिपेंड करता है कि इमाम और फ़खर उनको कैसा खेलते हैं क्योंकि आई थिंक फ़खर जो है अभी तक वो बड़ा एग्रेसिवली खेल रहा है सारे गेमों में इवन अगर आपने वेस्ट इंडीज़ वाला गेम देखा उसमें हमने स्कोर इतना हमने नहीं कर पाए थे लेकिन हमारा स्टार्ट जो है फ़खर जमान ने अच्छा किया था तो ही वाज इन द राइट माइंडसेट सो इफ़ ही गोज ऑन एंड प्ले विद द सेम माइंडसेट एंड इफ ही कनेक्ट्स द बॉल then we will be able to capitalize on their bowling attack and then I think उनका middle order जो है bowling में I think it's still weak so we can exploit that if we get a good start. ठीक है तो जहाँ तक हमारी predictions की I think we had 1 2 3 4 votes for Australia and then 3 votes for Pakistan. So इजाज़त दीजिए I mean this was the first ever show as I said I mean we'll be putting more content for you feel free to post comments and reach out to us individually as well so thank you show us some love show us some support and we will see you next time